So we will do whatever we have to survive, because the brain is not there to make you happy. It is there to help you survive. It is its entire function, its entire being is dependent, is centered on surviving, Yes. right? Yeah. So what happens when there's long term stress? It and the long term blood sugar in your body, it leads to insulin resistance, and then the most common diabetes that we have, which is type 2 diabetes, right? Yes. Type The 2 risk diabetes. of type 2 diabetes. And it's worth mentioning here कि ना सिर्फ इंटरजेनरेशनल स्ट्रेस होता है हमें, ठीक है, क्योंकि हमारी बॉडी स्ट्रेस कैरी भी कर रही है, एंड इट इज कमिंग फॉरवर्ड. हमें पेरेंट्स का भी जो स्ट्रेस, उनका जो स्ट्रेस होता है वो भी हम फील कर रहे होते हैं. We might be the oldest sibling or the youngest sibling or in the middle child. All of us are getting stressed. हम Yes. हमें हर अपने घर के environment से हमें stress का feel हो रहा होता है, जिसकी वजह से सब कुछ होता है. And why am I mentioning this? Because just like you've heard कि diabetes is a little bit genetic, कि आपकी vulnerability आ जाती है आपके अंदर उसको inherit करने की. इसी तरह से stress की वजह से ये vulnerability increase हो जाती है, which is Right. why it is so necessary, and we will talk about this in the later half on how to deal with stress, so that you are limiting this vulnerability that you have. Because so many of us in our families, we see how many people have diabetes, and the older you get, the more vulnerable you are to it. हमें तो बहुत कॉमन लगने लगती हैं ये बातें. अब तो ये एक्सपेक्टेड है कि एज के साथ भाई डायबिटीज हो जाएगा, Right. है ना. और कितनी खौफनाक बात भी है और कितनी वरीसम बात है हमारे लिए कि दिस इज द काइंड ऑफ फ्यूचर दैट अवेट्स अस. बिकॉज डायबिटीज सिर्फ हमारे पे शुगर को और इंसुलिन रेजिस्टेंस की बात नहीं रह जाती है. It then starts to cause other Organ problems. It damage. starts Yes. to cause kidney problems. It Mm. starts to cause you heart problems. It starts to affects your muscles. आपको क्या कहते हैं, आपको और वीक कर देता है, ठीक है. तो जो कोविड का एरा था, दैट काइंड ऑफ एक्चुअली वीकन आवर इम्यून सिस्टम ऑलरेडी. Our food and our diet has already weakened our immune system. Then diabetes and all of this has already weakened our system. तो Mm. और ऊपर से हम ये साइलेंट स्ट्रेसेस हैं हमारे के, तो और कितना हम स्ट्रेस लेते जाएंगे कि मूविंग फॉरवर्ड वी हैव बिकम वेरी वीक एंड वल्नरेबल, जिसकी वजह से आज यू नो nobody chose the option D, like power through, right? Which kind of shows कि हमारे पास वो energy नहीं रही है to deal with all of those things anymore. We like, Right. we want to power through, it's okay, we will avoid this, all of those things that eating, sleeping, binging, it's all avoiding the problem, right? It's all avoiding the guilt, the shame that is clawing on us कि अभी हमने काम नहीं किया, हम कैसे आगे लेकर इसको चलेंगे. तो I think acceptance. What I'm sorry, I'm cutting you off. I think here comes the fact that people are less accepting. Even if some are accepting, the actual power of implementing something that you want to do, we are lacking that. There's a whole lack of implementation, and I think that contributes a lot. it does, absolutely Yeah. does. So let's do a quick quiz moment for us. So, guys, just like before, which hormone impacts blood sugar during stress? So, drop your letters in the chat. Is it A, insulin, B, cortisol, C, serotonin, D, dopamine? Which, right, you guys were listening. Amazing. Yes, it is cortisol. Right. Thank you so much for the participation. Good work, participants. Right. Okay, so what does stress looks like in our daily lives? So emotional stress is not always loud, right? But it is very real. That emotional Yeah. stress जो कि हमारे फ्रेंड्स हमें देते हैं, जो वो बातें करते हैं, जिसको कहते थे यार मजाक ही तुम्हें करा था, मजाक ही था, तुम इतने सेंसिटिव क्यों हो रहे हो, इसमें क्या है, हर चीज को तुम सीरियस ले जाते हो. But your feelings that you felt in your body in that moment, that is very real, and that is also contribute when you are not addressing that in within yourself and you're ignoring it just like they have, it is also causing you emotional stress. हमने मेंटल स्ट्रेस की बात की, ठीक है, हमने सोसाइटल स्ट्रेस की बात की, which shows up in our psyche a lot. His stress can also show up as food, guilt and societal pressures, ठीक है, decision fatigue होता है.
क्या खाना है, कब खाना है, दिल नहीं करता खाने का, समझ नहीं आती क्या खाएं, जो घर में बनता है most of the time we don't like that, right? It's a tough choice. Right. And that does not mean कि आपको घर का खाना नहीं पसंद है. You could have multiple reasons. And the thing is कि जिस किस्म की society हम है ना, we have such strong emotions to food. ठीक है, we We are do, so yes. strong, इतना इमोशनल कनेक्शन है ना हमारा खाने के साथ. खाना अगर अच्छा मिल जाता है तो कैसे हम खुश होते हैं Yeah, यार. the soul feels up. बिरयानी की बात होती है, चाय की बात होती है, यूं मूड खुश होता है. बारिश होती है तो बारिश के साथ पकौड़े समोसे किसको नहीं पसंद. हमने तो अपने बना लिया ना कि जैसे बारिश होगी हमने तो कुछ फ्राइड खाना है, ठीक है. कोई खुशी की बात होगी तो हमने कुछ मीठा खाना है. कोई पार्टी करनी है, कजन्स के साथ घूमना फिरना है, फ्रेंड्स के साथ जाना है तो बर्गर्स पास्ता इस तरह से खाना है, ठीक है. हमने अपनी हर इवेंट के साथ ये सारी चीजें लगा दी हैं. और उसकी वजह से क्या होता है, this is something that we can see, but what happens is that अगर तो फॉर एग्जाम्पल हम उस इवेंट के अंदर है और कुछ हैपनिंग होती है, ठीक है, दैट काइंड ऑफ हर्ट्स अस या इमोशनली हमें डिस्टर्ब करती है, तो क्या होगा, हमसे खाना नहीं खाया जाएगा, या जो हम खाना खा रहे होंगे that will not have the most positive impact on us. Then what would happen again, your brain is going to interpret it as a problem. It is then also again going to ask the adrenal gland to release cortisol in your body, because again this is like a fight or flee moment for you. Okay, Yes. you either decide you have to do something, right? Body is always in this constant state of action. Then it's always on, we are always on. हमारी दुनिया कभी नहीं सोती है. हमारे फोन पर नोटिफिकेशंस आती रहती हैं, कॉल्स आती रहती हैं, मैसेजेस आते रहते हैं, ठीक है. हम सो जाते हैं, हम उठते हैं, हम देखते हैं कि ग्रुप मैसेजेस 200-400 भरे होते हैं, हुआ ही क्या, ठीक है. All right. Then what happens? Even positive environments can trigger us emotional overwhelmness, right? अब ये कैसे होता है? क्योंकि हम used to नहीं होते, ठीक है, towards something good happening with us, or we're not used to a constant safe environment. तो जब हम उस environment में जाते हैं, और वो हमारे लिए क्योंकि वो नया environment होता है, we have to relearn a lot of things. It causes us to have an overwhelm impact on the body, an overwhelm impact on the emotions on our body, again, which then फिर भी unfortunately it releases stress in your body. And that again, this kind of constant stress, the message here is that the constant stress in our lives, kind of has an impact on our blood sugars, and then that leads to insulin resistance, which then leads to most common type 2 diabetes. Right. Right. So again, I would love for all of you to participate and type one word in the chat that describes what your biggest source of stress is these days. For me, it would be financial stress, honestly. All participants, you're kindly invited to drop just one word. We don't need more than one word. Really? One word in the chat box. Like I said, for me, it's financial stress. Yes, employment. What triggers your basically the source of stress means what triggers your stress. Right, studies, Studies, comparison, responsibilities. subconsciously always in a fight mode. Exactly, career, Career, ongoing family tensions. I think career, all of us can relate to all of this, right? yeah. I'm relating to all of you. मुझे तो लगता है मैं सब चीजों से गुजर रही हूँ इस वक्त. What about you, Zainab? Again, it's hard for me to say, but I think one prime reason would be for me, I think, not meeting up to my own expectations because there's no family pressure, there's no family stress, there's nothing that I'm doing less in my career. I'm I'm in a good place. But again, there are expectations and there are goals that one sets for yourself. And when you don't meet that, that continuously leads to contributes to subconscious stress, which you don't realize, but it is there. Yeah, for me, Exactly. I जो think भी that. positive environment की Yes, बात की है ना, कि how positive yes, environment can also lead to emotional overwhelmness, and how we yeah, say कि self actualization, कि अपनी dreams, अपने goals achieve करो, और वो बहुत अच्छा right. है, वो बहुत अच्छा point of life है, but we little, oh, so sweet, someone is saying you're doing great, Zainab. That Thanks, is amazing. dear. Thanks, dear. So what happens then, उसकी वो जो unset expectations हैं वही हमें लेकर बैठ जाती हैं.
और वही फिर सारे को स्ट्रेस कॉज करती है। फिर जब इतना स्ट्रेस हम, और एंड द थिंग अबाउट स्ट्रेस, समथिंग दैट यू गाइस नीड टू रियलाइज इज दिस, दैट स्ट्रेस बॉडी में रहता है, Yeah. क्योंकि कॉर्टिसोल रेगुलरली रिलीज हो रहा है थ्रू द एड्रिनल ग्लैंड्स। उसके बाद जो शुगर आपकी बॉडी में रिलीज हो रही है, कैसे इंसुलिन रेजिस्टेंस आ रहे हैं, क्यों? क्योंकि जो मोस्ट ऑफ द टाइम जो आपका स्ट्रेस है ना, आप उसके ऊपर एक्शन नहीं ले रहे हो, ठीक है। एंड आप एक्शन लो भी क्या भाई, औरों की लड़ाई है और आप इफेक्ट हो रहे हो उससे, लेकिन आप उस लड़ाई का जाके सोल्यूशन नहीं निकाल सकते हो, ठीक है। बड़ों की बात है, फॉर एग्जाम्पल, या दोस्तों की बात है, या फिर फिलहाल आप कुछ नहीं कर सकते हो, ठीक है। यू हैव टू वेट, फॉर एग्जाम्पल करियर और एम्प्लॉयमेंट वाले टाइम के अंदर यू हैव टू वेट अलॉट टू सी, मतलब आपने अपनी एफर्ट पुट इन कर दी, आपने अपना CV रेज्यूमे भेज दिया, आपने इंटरव्यू भी दे दिया, यू थिंक यू आर डूइंग रियली वेल, बट देन यू हैव टू वेट फ्रॉम द कंपनी साइड टू गिव यू अ रिस्पॉन्स। लेकिन उस टाइम के अंदर यू गोइंग टू स्टे इन दिस स्टेट ऑफ स्ट्रेस, ठीक है, बट यू आर Yeah. नॉट डूइंग एनीथिंग फॉर इट, फॉर द बॉडी इन दैट केस। तो क्या होगा, तो वो बेसिकली दैट शुगर स्टेज इन योर ब्लड, you and because you're not doing any, खाने पे कंट्रोल करने, डाइट के ऊपर ज्यादा फोकस आ जाता है, बिकॉज वी थिंक कि वहां से हमें if we block that part in our lives, it's going to help us, that is going Yeah, to as do I so. mentioned before, that the main problem lies in implementation. If even if we can't, and even if we have like an option, on the other hand, people refrain Absolutely. from implementing it, taking an action. So I guess Yes. that's the problem. Yes. Okay, let's do this guided relaxation activity. I am going to turn Okay. off my camera. Zena, you can also turn off your camera so that we can all take participation in it with comfort, right? So what's going to happen is, these are just the pointers on the slide, okay? However, I am going to guide you through this. So you just need to listen to my voice and just do or try to do whatever I'm saying, okay? And even if you cannot fully engage into it, just try to, wherever you can, just join into it, ठीक है। अगर तो सुनते सुनते you drift off somewhere in your mind or something happens, that's okay, just gently come back to it, or all right, okay. Perfect. So let's just take a short pause together, because we've talked a lot on stress, और अपने realization बहुत ज़्यादा होती हैं, ठीक है। So find a comfortable seated position. You can keep your cameras off. You let your arms rest. Let your shoulders drop. And if you're comfortable, gently close your eyes. Start by simply noticing three sounds around you. It could be a fan, the hum of your laptop, voices outside. Just listen. No need to judge or label. Now, shift your attention to your body. Notice three physical sensations. Maybe your feet on the floor, the chair under you, or the air on your skin. Now, let's breathe together. We will use box breathing. Inhale for 4 seconds. 1, 2, 3, 4. Hold for 4 seconds. 1, 2, 3, 4. Exhale for 4 seconds. 1, 2, 3, 4. Right. Now, whenever you're ready, you can come back here. So, I was asked, how can we manage stress daily without disrupting our diabetic routines? There's only one powerful answer for it, and that is breathing, because that does not require money, that does not require tools, it only requires your attention and your focus, right?